Namaskar and a very good afternoon to all of you. Honorable Chief Guest, Shri Sidharth Nath Singh ji, Cabinet Minister, Ministry of MSME and Export Promotion, Government of UP. Honorable Guest of Honor, Shri Atul Garg ji, Minister of State, Medical and Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare, Government of UP. Our other distinguished guest, Mr. Stefano Botane, Sales and Marketing Director, BC India, Mr. Prahlad KN, Chief Program Officer, BC India, Mr. Rahul Mehta, CEO, Furniture and Fitting Skill Council, various dignitaries from the woodworking industry, BC India and FFSC. Dear students, members of the media, ladies and gentlemen, on behalf of management and complete staff of KIET Group of Institutions, I extend to you all a very warm welcome to the inaugural function of Centre For Advanced Woodworking. We call it popularly CAW. At the outset, I would like to mention that KIET Group of Institutions, with 22 years of glorious journey, has 6,000 students plus, which are empowered by 350 plus highly qualified full-time faculty. And the whole institution is very confidently marching ahead to meet the mission of the institution, which is to create industry-ready students. The effort of the institution in imparting technical education and to meet our vision has been aptly recognized by the Government of India when we achieved 176th rank nationally for engineering discipline and ranked in the band of 76 to 100 in pharmacy discipline in National Institutional Ranking Framework 2021, which was announced very recently on 9 September by Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji. I very proudly say that we are the only institution in Ghaziabad to have appeared nationally in top 200 rankings, sir. That's a matter of honor and pride for us, sir. I also would like to mention that KIT is not only focusing on the university curriculum, but also trying to bridge the gap between industry and academia, as mandated in the National Education Policy 2020. Towards this, we have got large number of centers of excellence and the technical clubs. We also have the technology business incubator, as has just been shown in the video. We have also got an industrial research and consultancy development center. And I would like to mention that in our near vicinity, the industry in Ghaziabad, they popularly call us as the industrial acharya, kite industrial acharya. Also, we are going to shortly have a NABL accredited lab. Also, a facility that is a common facility center proposal under ODOP scheme for Ghaziabad district has been submitted to the government of UP, and we have got a approval at the district level. Now, I would like to mention that since our mandate of the institution is to create a industry-ready students, we are very confident that the sanction of this common facility center to higher ranking, NIRF ranking institution like us will immensely benefit industry in Ghaziabad. And we are very keenly looking forward for the sanction of this particular common facility center for our institution. Now, we have discussed enough and you have seen in the video, but the furniture industry in India has seen a growth even during the COVID-19 pandemic and the lockdown. Now, you would also privy to this fact that there is a urbanization which is taking place at a very fast pace, where better lifestyles are going to be there. Demand for office and home furniture is going to increase in near future. So, whole unorganized sector of the furniture industry is heading toward the organized sector. Now, along with this, if I look at the furniture industry globally, it's about $130 million size global industry is there, and there is a 10 to 15% of growth every year. Now, India is not even exporting 1% of the global market. Now, we can see there are numerous domestic and export opportunities. For that, we need to reskill the manpower and upskill the existing manpower. Now, I would like to say the establishment of this center is therefore very timely in KIET Group of Institutions, and I would like to thank here Shri Syed Ahmed ji, CEO BC India, the Board of Directors of the BC India, including Mr. Stefano and Mr. Prahlad and his team who are here. And they have agreed and they have given the approval of setting up this prestigious state-of-the-art center for the entire northern India in our campus. We are really honored and we would like to thank you, sir, for this.
I also would like to mention that there has been a meticulous planning and the execution, and during this COVID-19 period, whenever there was a window for the movement of the machines and the movement of the manpower, those windows were adequately utilized, used, and that's why the continuous work kept on going in last 1 year, which has led to this inaugural function. I also take this opportunity to thank CEO FFSC, Mr. Rahul Mehta ji, also for his very, very enthusiastic support, which I have seen during our planning and the setting up stages. FFSC has recently completed 6 years, and I'd like to compliment Mr. Mehta that in the short span you have created a first of its kind, a skilling ecosystem for the furniture industry for all the stakeholders, including academia, and would like to compliment you. This is a fantastic effort which has been done. And in this direction, KIET and the Skill Council, we are also joined hands by signing an MOU, and that would be exchanging hands in the presence of the dignitaries shortly during the program later today. I would like to lastly assure the Honorable Ministers and the House present here that KIET, BC India and the Sector Skill Council will work together towards skilling the workforce for furniture industry and make KIET as one of the popular training destination that will fulfill the needs of the job aspirants, entrepreneurs and the furniture industry. The center, I am sure, will set an example towards industry-academia collaboration as mandated in National Education Policy 2020. I would like to thank you all for sparing your valuable time for this inaugural function and for showering your blessings. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Stefano is a veteran in the field of sales and marketing with 30 years of experience in the capital equipment industry. He has been associated with Biesse since the last 14 years, and currently he has settled in India since 2007 to head the sales and marketing function of Biesse India. Some of his responsibilities at Biesse India is to drive the machinery sales in India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan and Nepal, develop new products tailor-made for Indian market, expand the channel of Biesse sales network and strengthen online and offline service support of Biesse customer in India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan and Nepal. So now, I also take this opportunity to invite Mr. Stefano, Sales and Marketing Director, to give a brief introduction of Biesse India. We welcome you, sir. Thank you all. Namaste, Sat Sri Akal. Good afternoon all. They have already introduced my name is Stefano Botten. I am the Sales and Marketing Director of Biesse India. And on behalf of Biesse India, I would like to welcome the honorable chief guests from the government of Uttar Pradesh who have graced their presence for this inaugural ceremony this afternoon, along with the other chief dignitaries from FFSC and the KIET Group of Institutions. I also welcome our woodworking industry partner and supplier who have joined us today on this important milestone event of ours. Let me take a moment to introduce very briefly Biesse Group, which is an Italian multinational corporation with over 4,500 employees in 120 countries. Biesse began the journey in 1969, and today it designs and manufactures advanced machinery for processing wood, glass, stone, plastic and metal. Biesse India is a 15 years old subsidiary of Biesse Group, and it operates 2 world-class manufacturing facilities in Bangalore, spreading over 30,000 square meters with over 700 employees, producing over 1,800 machines per year, which are exported across 60 countries. Biesse Group's vision of Think Forward is all about the company's belief in staying focused on the future, and it is in this vision of ours which has resulted the collaboration with KIET Group of Institutions, Ghaziabad, to establish the Centre of Advanced Woodworking for the first time ever in North India. The Centre of Advanced Woodworking aims at providing the necessary training and developing the required skills among the young professionals and entrepreneurs in the woodworking industries.
As you all know, that 85% of woodworking industry in India is unorganized, still using basic hand tools and have very low mechanization in their workshop. It is of paramount importance for organizations like Biesse to create awareness about the various advanced technologies available in woodworking industries. Major points that I would like to stress today is that in Biesse we are constantly involved in a lot of activities under our CSR initiatives to develop our woodworking industry ecosystem. One such, it is the IWTC, Advanced Woodworking Training Center, which was established inside the IWST campus, the Indian Wood Science and Technology, under the Ministry of Forestry Research Council. IWTC has been a great success, as we have seen that 100% of all the trained batches so far have been absorbed in the industry, which clearly shows the demand for trained professionals in the woodworking industry. Post-COVID, since last year, we are seeing a trend in the majority of the wood workforce moving back to their hometown, especially in North India, and we have seen an opportunity to train more and more workforce in North, and hence such a center was required to be established. KIET Group of Institutions is more than 2 decades old, and it is a very prominent institution in Delhi-NCR. It attracts students from across North, and hence Centre For Advanced Woodworking was established here inside the campus. I'm sure that also Biesse customers in North India will be very glad to train their workforce under various training modules developed especially on the industry needs. Hence, it is our constant endeavor to support and empower the woodworking industry professional with enthusiasm and the more relevant knowledge and know-how of the various technologies available to produce furniture. This expertise is from our vast experience across different continents over these more than 50 years of existence. So we are really excited and proud to be part of these initiatives along with KIET, and we look forward to a very optimistic journey and seek your support in promoting the Centre for Advanced Woodworking in North India. Thank you all. Thank you, sir. Distinguished guests, honorable members on the dais, ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, on behalf of Biesse Group, I would like to congratulate KIET Group of Institutions for having the Centre for Advanced Woodworking in their campus. Yesterday, it was Engineers Day in honor of Sir M. Visvesvaraya, and today it is Vishwakarma Jayanti in South India, probably tomorrow here in North India, celebrating the celestial architect, divine engineer, master craftsman. A great beginning for opening a center for imparting skills in advanced woodworking technologies. I would like to extend warm wishes to KIET team and all present here on behalf of our CEO, Mr. Saeed Ahmed. I would like to thank our product managers, regional sales, our marketing and service team for their keen involvement in this project and installing the machines in these testing times. This has been the brainchild of our sales and marketing director, Mr. Stefano Botne. In early 2019, he proposed to have an advanced woodworking center in North India, preferably in Delhi-NCR region. So our team visited in September 2019 for the initial assessment. We found a ready partner in KIET with the potential, passion and drive for establishing the center. Dr. Garg visited Biesse India, Bangalore in November 2019, toured our factory and discussed with our top management with the commitment of opening the Advanced Woodworking Center here. And the MOU was signed on 3rd September 2020 to establish the center in KIET. While KIET was to provide the infrastructure, staff, and to run CAW, Biesse provided machines, CAD/CAM software under our CSR program.
To begin with, the center will offer CAD/CAM in Advanced Woodworking Certificate course. Short-term and long-term courses will be introduced in the coming months. These are some of the courses that we want to have here in CAW. In cabinet making, in doors and windows machining, and machine maintenance. There is also the scope of joint research programs with KIET in woodworking technology. BSA will extend support for the courses in CAW, also will train KIET staff from time to time. Participants will also get to interact with industry experts during BSA Inside events and expert training sessions. CAW is equipped with the latest machines, proudly made in India with Italian know-how. So thanks to the BSA smart technologies, now MSMEs can also attain Industry 4.0 capabilities. This I want to stress. So BSA Think Forward concept is strongly reflected in our CSR initiatives in education and skill-based training. So BSA and IWST Bangalore offers courses in woodworking in AWTC, equipped with our machines, software, and trained staff. It also involves with Indian Institute of Interior Designers. So we have with us here Ms. Sakshi Mishra. Please stand up. She is the topper from our batch 1 in Advanced Woodworking Training Center in the Diploma in Advanced Woodworking course what we offer there. It's running successfully the 4th year now. Thank you, Sakshi, for attending. For that matter, Ms. Sakshi Mishra is a postgraduate in biotechnology. Okay, so she was one among the first students to join the course with a lot of questions. What I'll become later, sir, I'll be absorbed in the industry, many questions, no? So I wanted her, she was actually pursuing a research for her PhD program. She had dreams. So she entered into this advanced woodworking program, and now she is actually a furniture design in her own right and is in the industry since 3 years. Thank you, Sakshi, for being a role model and being with us today. Really appreciate. And also, please share some of the knowledge with the people who want to enter into this CAD/CAM program, what is offered in CAW. We welcome you. Thank you. So connect with industry, institution, and industrial council associations, and even with government agencies is vital to provide the right framework for well-trained resources. BSA has the experience in these areas, and courses offered in CAW, KIET, will be in line with industry requirements, and it will be jointly certified by KIET, BSA, and endorsed by Furniture and Fitting Skill Council of India. So participants will be encouraged to turn entrepreneurs, to have their own factories, and provide employment rather than seeking employment. So internal demand for office, lab, institutional furniture can be generated within KIET, keeping CAW busy. Okay, so CAW has found its first customer in KIET itself. So the elusive mix of art, craft, and science is achievable today with the advances in technology. Dust, dirt, danger, terms associated with factory are things of past. Our intuitive and user-friendly CAD/CAM software, along with robust and safe machines, makes woodworking smart and practical. Big 3 board makers from India are investing in panel board plants. Future in panel-based furniture industries looks promising. India has a $61 billion market for furniture in 2025, out of which 60% is wooden furniture. So that's a huge potential market that is lying over there. Quality, cost, and sustainable manufacturing will be the 3 key differentiators, not only for the Indian market, but to a huge potential that lies in the export market. We are really lagging here. We are somewhere in the 26th or the 28th position, whereas China, and even for that matter, small countries like Poland and Vietnam, Turkey, they all feature in top 10 when it comes to exports of furniture.
So there is a huge potential that is lying here. Make in India, for India, and the world too. Also, the participants who want to open up their own startups and factories, they can become preferred suppliers for MNCs like IKEA and Herman Miller. So wood is good. It is cradle to coffin material. So there is naturally a connect with this material, and all of us are associated with wood in one way or the other. Touch wood. So we have seen the worst of pandemic times. The pandemic waves will be tamed and overwhelmed soon. We are confident that this Centre of Excellence CAW, what we are inaugurating today, will become the center of reference in the future. Thank you very much. Jai Hind. Furniture industry has a lot of opportunities, and it is growing immensely because of its size, which was estimated at 3 lakh crore in the year 2020. In the next 10 years, it is expected to go at least 20 times of this number. So we can all imagine the amount of opportunity this industry is going to create for employment in India. Our background, we at Furniture Mama, a retail venture of Biesse Private Limited, provide employment to approximately 150 people right now and seek to grow this consumption by almost 25 to 30% year on year. The future of this industry is totally dependent on automation with the help of world-class woodworking machines and their manufacturers across the globe. This thought came out with the Biesse team when we were buying our first CNC automatic machines with nesting technology from Biesse along with Mr. Stefano, and today it is becoming a reality. Solution. It will resolve one of our biggest industry problems of empowering skilled woodworking machinery workers. We would love to come forward and extend our support to Team Biesse in their honest endeavors. Our commitment, I would also like to take this opportunity and announce that we would like to absorb the complete first batch of students from the first program as a gesture to this beautiful initiative by Team India. Thank you very much. Mr. Rahul Mehta, the CEO, Furniture and Fitting Skill Council, in front of you. Mr. Rahul Mehta, CEO of FFSC and alumni of Shri College of Commerce. Mr. Rahul Mehta comes with a rich experience of heading one of the India's most versatile and unique contract furniture manufacturing company as a CEO for 6 years and having an overall 15 plus years of experience ranging over risk advisory, trading, event management, interiors and furniture industry. He has been associated with the FFSC since early stages of inception and has been an ardent supporter of the Skill India mission and initiatives like Word Skill competitions. So we welcome you for your address, sir. A lot has been told about the opportunity that exists in the furniture industry. So I guess I'm not going to talk about the numbers there. I'd like to share a story, a small story of what happened last month. We were having interaction and discussion with AICTE. And little did we know that the government is working at that pace in almost all the sectors. हमें सबका पता नहीं रहता है. That they collaborated with all the institutes that are there under the gambit, and they created about 6 lakhs plus internship opportunities. So if I look back to the days when I was into school and I was into college, हमारे पास internship पे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, apply करना पड़ता था. अब सारी opportunities एक जगह पर साथ में आ रही है. Now that is the power of technology that we have today on our hand, and that power of technology is kind of reflected in almost all the sectors. So furniture or interior sector is also not untouched from that. Now what is the opportunity that this sector is now bringing with the power of technology is that it is opening doors for those job roles or those kind of career options which were not considered earlier. अगर आज भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप फर्नीचर इंडस्ट्री में करियर बनाएं, तो शायद पहला ख्याल यही आएगा कि कारपेंटर बैठा हुआ है ज़मीन पर और वो आरी रंधे से काम कर रहा है, सब तरफ दूल्हा दूल्हा फैला हुआ है. इनफैक्ट फैक्ट्री की भी सोचेंगे तो शायद आप कुछ इस तरह से इमेजिन करेंगे. बट दैट्स नॉट द केस एनी मोर. द टाइम्स आर चेंजिंग, द जॉब रोल्स आर चेंजिंग. अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड वर्क की, जो हमारे यहाँ का मूल तरह से कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट होता है, जो 1% ऑफ एक्सपोर्ट शेयर के अंदर में. और क्या चेंजेस हमारे इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं, क्योंकि हम मेजरली इंपोर्ट
ही करते हैं फर्नीचर, हम लोग इंडिया में नहीं बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं बहुत बड़ा शेयर हम लोग फर्नीचर का। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या चेंजेस से हमें फ़ायदा मिल सकता है और हम कहाँ पर एज अ फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल उसमें हेल्प कर सकते हैं, हम वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जिस तरह से आज यहाँ एक एडवांस वुड वर्किंग सेंटर की बात हो रही है, जिसके अंदर में अभी प्रहलाद जी ने भी बताया कि आपको कैड बेस्ड ड्राइंग, मतलब कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, ये नया टर्म नहीं है, बहुत पुराना टर्म है, बहुत सालों से आर्किटेक्चर इंटीरियर में चलते आ रहा है। कैड बेस्ड ड्राइंग के साथ में आपको कैम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी मिलेगी, विच इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो इट मीन्स दैट instead of designing with your on a pencil and sketch board, you can now do it on the computer, and you can also devise the language जिससे मशीन भी समझेगी आपकी बात और मशीन खुद बना सकती है। इसको बहुत आसान शब्दों में समझा जाए तो हमने वर्ड सबने यूज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप वर्ड पहले जैसे पेंसिल पेपर यूज़ करते हुए लिखते थे और उसका एक वर्जन आया कि आपने कंप्यूटर पर लिखना चालू कर दिया, आपने प्रिंट कमांड दिया और प्रिंट करते हुए आपके पास में एक पेज पे लिखी हुई सारी बात आ गई। तो कुछ उसी तरह से, बिल्कुल इतने आसान तरीके से नहीं लेकिन काफ़ी आसान तरीके से आप फर्नीचर को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, आप उसको मशीन के साथ में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट जिस तरह से निकलता है उस तरह से बोर्ड्स निकल भी सकते हैं। तो क्या इससे ऑटोमेशन से जो अधिकतर बात दिमाग में आती है कि क्या इससे आज जॉब्स जा रही हैं, क्या इससे जो हमारा एक बहुत बड़ा तबका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ा हुआ था उनकी जॉब्स जा रही है, तो ऐसा नहीं है। हर एक चेंज के साथ में एक शिफ्ट आता है जिसके कारण एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात आज यहाँ कर रहे हैं वो भी कुछ ही तरह की अपॉर्चुनिटी है। जब ऑटोमेशन आता है तो देयर इज अ ह्यूज फ्लीट ऑफ इंस्टॉलर्स दैट आर रिक्वायर्ड नाउ, द ह्यूज फ्लीट ऑफ डिजाइनर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड नाउ हु कैन एक्चुअली वर्क ऑन दोस कंप्यूटर्स, वर्क ऑन दोस कैम मशीन्स एंड एक्चुअली कन्वर्ट दोस डिजाइंस एंड आइडियाज इनटू रियल टाइम प्रोडक्शन। और जिस तरह का मार्केट इंडिया का है, हम भले फॉरेन मार्केट की बात नहीं करें, हम केवल इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट भी बहुत बड़ा है और इंडियन मार्केट ने अभी फर्नीचर को एक लग्जरी आइटम की जगह एक नेसेसिटी की तरह सीखना समझना चालू किया है। पिछले 5 से 10 सालों के अंदर में इंटीरियर्स और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में ऐसे कई प्लेयर्स आए जिनके नाम आपने पहले भी नहीं सुने थे। लिव स्पेस, अर्बन लैडर, पेपर फ्राई, ये सब इन सब चीज़ों ने आज फर्नीचर को एक ब्रांड की तरह बना दिया जिससे एस्पिरेशनल वैल्यू टू ओन फर्नीचर भी बढ़ गई है। जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की इतनी बढ़ने की तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि इनको प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कहाँ बनेंगे। तो जब इन्हें प्रोवाइड करने के लिए, इन्हें देने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाना पड़ेगा तो एक अपॉर्चुनिटी करियर की वहाँ हम सबके लिए बन रही है। इसी अपॉर्चुनिटी को आप तक पहुँचाने के लिए स्किल इकोसिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिस तरह से एजुकेशन आपको एक जनरल डिसिप्लिन पे तैयार करती है, वो ये गारंटी नहीं करती कि आप कल को जाके कौन सा स्पेसिफिकली जॉब करने वाले हैं। स्किलिंग थोड़ा सा हट के काम करता है। स्किलिंग आपको उन्हीं जॉब्स के लिए तैयार कर रही है जो मार्केट में ज़रूरत है, जो इंडस्ट्री में ज़रूरत है, और वो उसी के लिए आपको ट्रेनिंग दे रही है। तो हम एज अ स्किल काउंसिल इसी जॉब रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाते हैं, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करने में मदद करते हैं। और जिस तरह से आपको CBSE से एक 10th और 12th बोर्ड का रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन मिलता था, उसी तरह से काउंसिल आपको एक रिकग्नाइज सर्टिफिकेट देती है जिसकी वैल्यू इंडस्ट्री समझती है, इंडस्ट्री जानती है और उसके थ्रू आपको एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो साथ ही साथ में मैं बधाई भी देना चाहता हूँ KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को और बियसे इंडिया को जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। और इस साथ में बताना भी चाहूँगा कि हम लोग साथ में हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, जैसा गर्ग साहब हमने शुरुआत दौर से रखा है, और आपके लिए इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कॉम्पिटिशन्स, जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। Udhmenev siddhyanti karyani na manurate. That means, without rigorous efforts, nothing can be accomplished. The saying is in congenial with the milestone achieved by the KIET Group of Institutions. For this, I would request Director Sir and Mr. Rahul Mehta Sir to come forward to exchange of MOU. Overjoyed to take the opportunity to introduce our guest of honor, Shri Atul Garg ji. मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ नाथ जी हमारे MSME मिनिस्टर हैं, हमारे स्टेफिनो बॉटनी साहब आए हुए हैं। अभी आपने उनका बहुत अच्छा, मेहता जी की बहुत अच्छी बातें सुनी, प्रभाकर जी की बहुत अच्छी बातें सुनी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अचानक से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पहचान बनाने के लिए
आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए जो यहाँ की युवाओं की सबसे बड़ी शक्ति भारत की है, उसका पूरा उपयोग हो सके ग्लोबली, इंटरनेशनली, तो उसकी जो तड़प सरकार में दिखाई देती है, उसका परिणाम है कि आज हमारे सिद्धार्थ नाथ सिंह जी दूसरी दफ़े 1 साल के अंदर अंदर इस कॉलेज में आए हैं। यही वो एक कारण है कि यहाँ पर आज इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आ रही हैं। जैसा कि हमारे मेहता जी ने बोला कि हमारे यहाँ जब इंटर्नशिप होती थी तो बहुत मुश्किल काम होता था, कई सिफारिशें होती थी, और आज आपके कॉलेज के अंदर ही इंटर्नशिप हो सके, उसके अंदर आप लोग मैनेज कर सको, इस बात का भी प्रबंध किया जा रहा है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इसका कितना फ़ायदा आप उठाते हैं ये आपके ऊपर है। मेरे जैसा व्यक्ति हो तो मैं तो कॉलेज से ही एग्रीमेंट करूं कि साहब सहारनपुर से यहाँ पर जो दिल्ली का कौन सा बाज़ार है जहाँ कीर्ति नगर है, दिल्ली से कीर्ति नगर से मैं जाऊंगा और मैं वहाँ से ऑर्डर लेके आऊँगा, यहाँ की मशीनों पे काम कराएंगे और वहाँ पर सामान बेचेंगे, तो आप हमारा बहुत कम पैसों में काम कर देना या फ्री में काम कर देना, पैसे मैं कमाऊँगा। मैं तो कल से पैसे कमाने का सपने देखने लगता अगर मैं आपकी जगह पर होता आज की डेट में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस करने की, काम को सीखने की, अपनी खुद की फैक्ट्री लगाने की, तो उसकी इच्छा शक्ति आप में जागे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वो मंच पर आकर अपने आशीष वचनों से हमें कृतार्थ करें। बहुत धन्यवाद फॉर स्टीफानो who's on the dais, और कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे अपने मीडिया जगत के भी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स कर दूं, तो जिससे मेरा ये मानना है कि हम जो इतना बड़ा अतुल गर्ग जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं काइट के माध्यम से, वो देश में भी उसकी चर्चा होनी चाहिए। मंचासीन यहाँ पर आपके प्रहलाद जी भी बैठे हैं, राहुल मेहता जी ने भी अभी आपके बीच में फिटिंग एंड स्किलिंग काउंसिल के बारे में बताया। उन्होंने बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में बहुत चीज़ें कहीं, and he tried to explain how technology is helping in improving the GDP, how the technology is helping in creating more employment. One should not be scared about it. ये सही बात है कि इसमें कोई डरना नहीं चाहिए। मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी को जितना अपनाएंगे उतनी ही नौकरियां सामने आती जाएंगी। उपस्थित इस सभागार में in this August gathering, in this August hall, सभी यहाँ पे गणमान्य व्यक्तिगण, मेरे यहाँ पे मेरठ और गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के मेरे विभाग के सहयोगी कमिश्नर्स, जो भी आंकड़े बहुत दिए गए हैं, तो इसलिए मैं आंकड़ों में फिर मैं नहीं फंसना चाहता। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। किसी ने कहा 1,90,000 करोड़ की मार्केट है फर्नीचर की। यहाँ से अभी यंग मैन आए, उन्होंने कहा 3 लाख करोड़ है। और इस समय इंडिया की जो मार्केट एंड इंडिया जो अचीव कर सकता है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, निर्यात के साथ, तो उसका भी बड़ा भारी फिगर दिया गया। 20 टाइम ज़्यादा, तो 20 टाइम ज़्यादा तो 60 लाख करोड़ हो जाएगा, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं कुछ गूगल बाबा को पढ़ने लगा कि भाई गूगल बाबा कुछ समझा दें मुझे। तो गूगल बाबा ने बताया कि आपकी पोटेंशियल जो है वो 13% बढ़ेगा 26 तक की, और वो 65 बिलियन हो जाएगा। नाउ द फिगर्स आर इन इटसेल्फ माइंड बॉगलिंग। तो ये जरूर समझ आ गया कि इसके अंदर
स्कोप बहुत है। अब स्कोप जो बहुत है तो हम लोगों के एक शिक्षा प्रणाली है। We have an education system in this country. The Government of India, under the Prime Minister, we have introduced new education policy, नई नीति भी लेकर आए हैं शिक्षा की, लेकिन उसके अंदर भी बहुत चीज़ें हैं जो बहुत इम्प्रूवमेंट है और स्किलिंग के ऊपर बहुत बड़ा एक फोकस दिया गया है। उसका कारण समझना चाहिए। आज भी जो बच्चे होते हैं वो तो आजकल मैं मानता हूँ बच्चों को आप कहीं एक रूम में बंद कर दें रात में और अंधेरे में कर दें, वो 3-4 बजे तक की वो अपने छोटे से स्मार्टफोन पे दुनिया देख लेगा और दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी भी निकाल लेगा और जानकारी लाके आपको अगले दिन दे देता है। बट पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। आज भी उनके दिमाग में रहता है कि भाई बेटा मेरा इंजीनियर हो जाए, बेटी जो है वो भी डॉक्टर बन जाए या बेटा बन जाए या MBA कर लें, भाई बीच में चल गया BBA कर लें। तो ये सब चीज़ों में घिरा रहता है और पेरेंट्स उसको एक प्रकार से मेरा मानना है कुछ मजबूर भी करते हैं। एंड दे मिस आउट ऑन द रियल वर्ल्ड। एंड व्हेन दे मिस आउट ऑन द रियल वर्ल्ड, देन जो बच्चे होते हैं वो भी मिस आउट करते हैं ऑन देयर ग्रोथ पोटेंशियल एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। और इसलिए जब हम देखते हैं कि विदेश जाएंगे तो जो कारपेंटर भी है वो भी बगल में रहता है और जो वाइट कॉलर जॉब जिसको कहते हैं, जो एक ब्यूरोक्रेट होता है, वो भी उसी में रहता है बगल वाले घर में, और जो बगल का कारपेंटर शायद उससे ज़्यादा सैलरी कमा रहा होता है। ये जो चीज़ है इसको समझना हम लोग के बच्चों को बहुत आवश्यक है। और एक चीज जो मूल मंत्र है हमेशा याद रखना, मूल मंत्र यह है जहां बिजनेस है वहीं पे सैलरी भी है। बिजनेस कहीं नहीं है तो आपकी सैलरी नहीं है, तो आप वो घसी पिटे जो नौकरियां होती हैं उसी में करते रहोगे। आज जितना भी इंजीनियर बनो, जितने भी MBA कर लो, उसकी आवश्यकता होती है, मगर आप स्किलिंग करके और स्किलिंग के साथ MBA बन जाओ तो पता नहीं कितनी आपकी आवश्यकता हो जाएगी। क्योंकि एक ये फर्नीचर और वुडक्राफ्ट इंडस्ट्री, मैं कहीं बीच में भी चलूंगा तो आने वाले समय में भारत की कैपेसिटी, मेरा ये मानना है 15 से 20 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जरूर होगी। अब 15 से 20 लाख करोड़ की कोई इंडस्ट्री है, वो भी भारत के अंदर है और पोटेंशियल है भारत के पास, तो आई एम श्योर देयर विल बी मेनी बिजनेसमैन हु विल बी गेटिंग इनटू दिस बिजनेस। So once they start getting into this business, they need a lot of skilling people. And I'll tell you, as a minister for MSME and investment, I've been talking to many industries. They want to come into India because they feel India is the best market to invest, not China. मैं उदाहरण देता हूँ आपको, डिफेंस इंडस्ट्री। हम लोग के उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है। अब उस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं बात करता हूँ बड़ी कंपनियों से, तो कहते हैं हमारे पास स्किल तो बताओ कहाँ से आएगा। फ्रॉम वेयर डू आई गेट दैट स्किल टू प्रोड्यूस, लेट्स से इवन अ बिग मिसाइल और अ रॉकेट लॉन्चर which is of the state of the art, or let's say we want to make a stealth naval ship, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारे पास उस दिशा में स्किलिंग है ही नहीं। Therefore, हम लोग उत्तर प्रदेश में I have been in discussion and we have finalized टाटास के साथ और सीमेंस के साथ, जो जर्मनी की कंपनी है सीमेंस,
फॉर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो लगाएंगे। वो लगभग दोनों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 700 से 800 करोड़ का, दोनों का अलग अलग है। अब उसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो इंजीनियर्स घूम रहे हैं, वो उसके अंदर जब तक कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नहीं काम कर लेंगे, स्किलिंग नहीं ले लेंगे, सर्टिफाइड नहीं हो जाएंगे, उनको वो नौकरी नहीं मिलने वाली बड़ी कंपनियों में। तो अब स्किलिंग की महत्व है जो वो बहुत बढ़ता जा रहा है। नाउ सिमिलरली यू टेक एनीथिंग, मैं आज आपको बता रहा हूं, अभी इसके बाद आई हैव टू, देयर इज अ मीटिंग अराउंड 3:30 is with the Indian Cellular Electronic Association. They had come to make a presentation to me. वो PWC के साथ कंबाइन करके उन्होंने दिया था कि इन यूपी के अंदर जो सेलुलर मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक की हमारी पॉलिसी आई है, उसमें एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट आया है। यूपी, I mean in UP, Noida and Greater Noida and Yamuna Expressway, we are the hubs now. No more Karnataka, no more Bangalore, no more Hyderabad, and no more Chennai. Vivo, Oppo, Samsung, and many others, they have all started manufacturing here. कोविड के पीरियड में जब चाइना से इंडस्ट्रीज भाग रही थी, तो सैमसंग की एक एग्जिस्टिंग यूनिट वहीं पे था चाइना के अंदर, और वो जो है वो इट्स अ हाई एंड टेक्नोलॉजी। उस हाई एंड टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड में वो 3 ही ऐसे प्लांट्स हैं, और वो प्लांट जो है, जो आपके मोबाइल है उसके ऊपर जो डिस्प्ले यूनिट है, वो 3 बनते हैं। 2 उनमें से सैमसंग के हैं, एक वो चाइना में था, वो चाइना से निकलना चाह रहा था, जो ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंसेस हुए। अब वो 5,500 करोड़ का एग्जिस्टिंग लॉक स्टॉक बैरल उनका हम लोग लेकर लास्ट ईयर लेकर आ गए, वो नोएडा में लगा और वो इस साल प्रोडक्शन में आ गए हैं। बट फॉर दैट, टू रन दैट, दे हैड टू गेट almost about 200 people who are trained, because none of them were available or skilled in India. अब उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जा रही है कि जिससे उनकी स्किलिंग हो। तो लगेगा तो बहुत अच्छा कि 5,500 करोड़ को आ गया तो हम लोग को बड़ी नौकरियां मिलने वाली हैं, मगर नौकरियां फिर मिलेंगी नहीं, क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। आने वाले समय में, एंड आई मीन इट जेन्युइनली, कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सरकार आए, वो सरकार अब सरकारी नौकरियां नहीं पैदा करेंगी, वो सरकार के माध्यम से नीतियां बनाएंगी और उसको प्रोत्साहित करेंगी। विल ओनली फेलिसिटेट। सरकार का काम ही नहीं है साहब, इंडस्ट्री चलाना सरकार का काम है, होटल चलाना सरकार का काम है, बस सर्विस चलाना सरकार का काम रह गया क्या? नहीं साहब, हमारा नहीं है। वी नीड टू मूव आउट। पुलिसिंग है, डिफेंस है, आपका एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, ये सब है, नीतियां हैं, विदेश नीति उसमें है, तो कितनी नौकरी रहेंगी? नीति बनाइए, उसको जमीन पे लागू करें हम लोग। तो इसलिए ये जो आप लोगों ने जो कार्य शुरू किया है, बिकॉज एज ए MSME मिनिस्टर वी आर पुटिंग अप 8 woodwork and furniture common facility centers, or you can say clusters. That's my job, and therefore I was so interested in trying to understand, because जब मंत्री हूं तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि जो नीचे जो कारीगर है, जिसके पास हुनर है, शिल्पकार है, उस शिल्पकार को मैं कहूं कि भाई आज से मशीन पे काम होगा, तुम्हारे लिए कोई है नहीं। एक तो ये, दूसरा मैं उसके जो हाथ में हुनर है, जो परंपरागत है, मैं सहारनपुर चला जाऊं, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, वो 600-700 साल से उसके परिवार में यही काम हो रहा है।
उसको मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा? वो जो उसका जो परंपरागत उद्योग है, उसके पास जो हुनर है, उसको तो मैंने प्रिजर्व करके रखना है. That is not gold, it's platinum for us. Because विदेश में कहीं नहीं अवेलेबल है. और उसके लिए मार्केट बनानी है, क्योंकि जब ये मॉड्यूलर बेचेंगे या मशीन कट बेचेंगे, वो बिकेगा 100 रुपए, उसका बिकेगा 1 लाख रुपए का. दैट इज द मार्केट आई एम क्रिएटिंग अंडर आवर ब्रांड, हमारे मुख्यमंत्री जी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कॉल ODOP. अभी मैं दुबई लेके जा रहा हूं अपने सरकार के खर्चे पे 18 जो फर्नीचर बनाने वाले हैं हैंडीक्राफ्ट्स पे, ऐसे जा रहे हैं, कोई 100 के ऊपर अलग अलग, कोई कपड़ा का है, कोई कुछ का है. मैं 18 ओनली फॉर वुड वर्क आई एम टेकिंग टू दुबई, नेक्स्ट मंथ लग जाएगा, सो दैट दे कैन शोकेस द फाइन आर्ट, द क्राफ्ट्समैनशिप दे हैव. And through that, now if people want to give order, then I need to work with you all to understand what your machine can do. And we blend together. उसका हुनर, आपकी मशीन, हम किस प्रकार से दोनों का संगम करवाएं, जिससे उसका हुनर बचा रहे, आपके मशीन से प्रोडक्शन बढ़ता रहे. इसी प्रकार से हमारी हर योजना चलती है. और जो पैसा होएगा उस क्लस्टर को तैयार करने का, 15 करोड़ तक की एक क्लस्टर तैयार करने के लिए हम लोग आपको अनुदान देंगे, हम लोन नहीं देते हैं. वी विल गिव यू अ ग्रांट एंड विल क्रिएट ए SPV. आप लोग बनाइए, अपनी एक SPV बनाइए, इसके टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, वो बताएंगे. उस SPV के माध्यम से देन यू रन इट. गवर्नमेंट विल नॉट बी इन्वॉल्व एट ऑल, विल नॉट कम एंड आस्क यू. यस, वी विल ओनली आस्क यू वेदर द मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली एंड नॉट स्नाइफन्ड ऑफ. वो जरूर करेंगे, उस पर ऑडिट करेंगे. तो उतना हमारा रोल रहेगा. एंड फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल, आइकिया को हम लोग लेकर आए नोएडा में, उनका 4,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाया, मैं ही नेगोशिएट कर रहा था उसको. अब वो जो आ गए हैं, तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपनी हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री जो क्लस्टर बन रहा है उसके साथ जो टाई अप कर दो, जो अतुल गर्ग जी ने अभी कहा कि दुबई नगर जाके मैं उनका ऑर्डर ले आऊं. सो अब मैं वहां पे जो लाऊं, तो उसमें आप कैसे मदद कर सकते हैं? आपकी मशीन, आई विल बी मोर देन हैप्पी. आपकी जो स्किलिंग सेंटर यहाँ पे, हाउ कैन दे हेल्प टू क्रिएट दैट स्किल फोर्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी. दैट इज द एक होलिस्टिक जो हम लोग अप्रोच रखेंगे, तो चीजों को आगे लेके जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, दोज हु आर लिसनिंग टू मी, एंड यू मे बी थिंकिंग वी पॉलिटिशियंस लव टू स्पीक व्हेन वी सी द माइक, but those who are listening, young boys and girls, the future lies here. The future lies in getting yourself skilled and becoming professional in that particular area, along with your basics. Certainly you need the basics. And the world will move in that direction, be it anything. If you want to get into a apparel business, garment के काम करना चाहते हैं, आप professional नहीं बनोगे उस तरफ. हम जरी जरदोसी को किस तरह से और फाइन आर्ट्स बना सकते हैं, वो हमारा काम है. गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है और मदद कर रही है इस समय. मगर आपने सोचा कि हमने खाली एक अप्रैल की गारमेंट बनाने की एक फैक्ट्री लगा दी, तो ये मान लेना आप मार्केट से आउट हो उसी दिन. मगर उसके अंदर आपने देखा कि हमने खाली चिकन करी या जरी दरसोसी का काम करना है, उस फाइन आर्ट के अंदर फिर हमारी मशीन कैसे इसको प्रोडक्शन और अच्छा कर सकती है, वहाँ पे आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया. देन यू हैव द मार्केट टू योरसेल्फ. तो आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट अतुल गर्ग जी, आपको और आपके इंस्टीट्यूशन को. सर्टनली I would love to visit Biesse's Bangalore unit whenever I am on that side, which is very rare, but whenever I go,
ना तो अतुल जी किसी दिन लेके चले जाएंगे, चुनाव के बाद तो ऐसे ही चला जाऊंगा इनके, तो उनके साथ चला जाऊंगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप सच इनिशिएटिव्स कंटिन्यू एंड आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कीप कमिंग। मतलब आप परमानेंट एक रख ही लो मुझे क्या वैसे काम करते रहो, मैं आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Now I would request Professor Dr. Ashish Karanwal, Head Centre of Advanced Woodworking, to propose our deepest appreciation to everyone present here. Good afternoon, respected dignitaries. Myself, Dr. Ashish Karanwal, HOD Mechanical Engineering Department and Head Centre of Advanced Woodworking. It's my proud pleasure and honor to offer a vote of thanks on this poised occasion. On behalf of the Institute and the Department of Mechanical Engineering and Centre of Advanced Woodworking, I heartfully thanks Shri Sidharth Singh ji for sparing his valuable time for this ceremony, and I wish if everybody can put in a great applause for this, because it's an opportunity, sir, for us, sir, to listen you. I also wish to thank our Chairman, Governing Council, KIET Group of Institutions, Honorable Minister Shri Atul ji, for gracing the occasion and being with us now and ever. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time. Now, as we know that Centre of Advanced Woodworking has been established in collaboration with Biesse India and Furniture and Fitting Skill Council. A big thanks to Mr. Stefano Bottini, Director Sales and Market, Biesse India, who has come all the way from Bangalore and spared his valuable time to our center and inaugurated this Centre of Advanced Woodworking. Thank you so much, sir. Thank you for sparing your valuable time. I'd also like to thank our management members, Shri Suresh Agrawal ji, Shri Sunil P. Gupta ji, for gracing the occasion and supporting us all the time. Thank you so much, sir, for sparing your time. Now, I'd like to thank the man behind the show, Mr. Prahlad ji, who is the Chief Program Officer from Biesse India. Actually, he started this concept and he visited, and somehow the things got materialized in a best way. So I wish to say thank you so much, Prahlad ji, for supporting us, supporting KIET. Now, I'd also like to thank Mr. R.K. Singh ji. I would like to thank Mr. Rahul Mehta ji for supporting us for skilling system. Now, I would also like to thank Mr. R.K. Singh ji, Regional Manager at Hatchet India, Mr. Lakhan Tandon, Regional Manager at Lattice Tools, Mr. Junaid, Regional Manager Rehab Polymers. I'd also like to thank Mr. Satish Kumar Chandra, Proprietor MBS Global, Mr. Amit Arora, Fusion Group from FFSC, for sparing their valuable time and gracing the occasion. I'd also like to thank our Director Sir, Joint Director Sir, Deans, HODs, faculty members, staff members, and my dear students. Big thanks to you. Now, last but not the least, I'd like to thank for my team members, team from ITSS. Special thanks to Mr. Vinay ji, Mr. Sunil from Purchase Department, Administrative Officer, Mr. KP Singh ji and his team, and most importantly, my own support system, that is the team of CAW and team of Mechanical Engineering Department. Thank you one and all. Thank you so much. Thank you, sir. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन